Good morning everyone and welcome to the class. Today we will revise the second chapter of your first book, and the chapter is End of Bipolarity. And as we all know, we have many new content in this chapter. First of all, chapter 3 is not there now in your syllabus, that US hegemony, and some important content of that chapter has been added in this chapter only. Okay, and then some new topics which we have discussed during our teaching and studying. We have done Arab Spring, then CIS, and all these are added in the this chapter. So now this chapter has become somehow lengthy. So today we will do very short type questions from this chapter, which are very appropriate for multiple choice questions. Okay, so the first question is, when did the socialist revolution when did the socialist revolution take place in Russia? It was in 1917. Okay, and now we see the next question. This is, so the next question is, name the political party around which the Soviet name the political party around which the Soviet system was centered. So what was the political party? It was the Communist Party. Okay, एंड ये सब एक नंबर के क्वेश्चन है. देन या फिर इसको अगर ऑप्शंस दे दिया जाएगा तो ये आपका एमसीक्यू बन जाएगा. ठीक है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वाज द इकोनॉमी ऑफ द सोवियत सिस्टम? How was the economy of Soviet system? The economy of Soviet system was planned and controlled by the state. Okay, and now we see the next question. The next question is, the question is, who was the leader of, so not Soviet, who was the leader of
Who was the leader of socialist bloc? Soviet Union, yeah, USSR was the leader of Soviet socialist bloc. Okay, and now we have another question. The question is, then the next question, which we have done earlier also, this is very important. When did the Soviet Union invade when did Soviet Union invade Afghanistan? It was in the year 1979. Okay, and now we have next question. When did Mikhail Gorbachev became the General Secretary of Communist Party of Soviet Union? When did Mikhail Gorbachev become the General Secretary of the Communist Party of Soviet Union? The Communist Party of Soviet Union. When did Mikhail Gorbachev become the General Secretary of the Communist Party of Soviet Union? It was the year 1985. Okay, and then there can be another question, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, द क्वेश्चन इज नेम द व्हाट रिफॉर्म्स वर डन बाय मिखाइल गोर्बाचेव, जिसमें कि आपको बहुत ही शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट है. सो this question is name the reforms started by Gorbachev in USSR. So what was the name of the reforms? It was glasnost and perestroika. ठीक है, स्पेलिंग आप याद कर लेंगे और इसका मीनिंग भी, जो दीज आर रशियन वर्ड्स, इसके मीनिंग भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं. And the question is what does perestroika mean? पेरिस्ट्रोइका का मतलब हुआ रीस्ट्रक्चरिंग, फिर से इकोनॉमी को फिर से उसकी स्ट्रक्चर को चेंज करना. सो दैट इज पेरिस्ट्रोइका, रीस्ट्रक्चरिंग. एंड देन द नेक्स्ट इज
What does glasnost? Glasnost means openness. ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट है इसमें से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए. एंड नाउ वी सी some other important questions from this chapter. Who was Boris Yeltsin? Who was Boris Yeltsin? So, Boris Yeltsin was the head of the Communist Party in Moscow, and he initiated a series. Boris Yeltsin was appointed. कौन थे बोरिस येल्सिन? Boris Yeltsin was appointed by Mikhail Gorbachev as the head of the Communist Party in Moscow. दो चीज़ें इसके बारे में आपको याद रखना है. जब 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, तो उन्होंने मॉस्को के जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, मॉस्को का जो यूनिट था कम्युनिस्ट पार्टी का, उसका हेड बना दिया था बोरिस येल्सिन को. और इसके अलावा जो बोरिस येल्सिन थे, जब रसिया यूएसएसआर से अलग हो गया, है ना, जब रसिया यूएसएसआर से अलग हो गया तो वो रसिया के प्राइम मिनिस्टर भी बन गए थे और प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे काफ़ी दिनों तक वो रहे थे. सो दीज आर द टू थिंग्स अबाउट बोरिस येल्सिन. पहली चीज़ यही होगी कि वो मॉस्को के कम्युनिस्ट पार्टी के हेड थे एंड ही वॉज अपॉइंटेड बाय गोर्बाचेव. और दूसरी चीज़ जो हम कह रहे हैं कि जब 91 के दिसंबर में 91 के जून में, है ना, 91 के जून में रसिया में इलेक्शंस होता है. रसिया अलग हो चुका था. रशियन पार्लियामेंट जो है वो जून 1990 में ही यूएसएसआर से अलग हो चुका था. तो जून 1990 में अलग होने के बाद जून 1991 में इलेक्शंस होते हैं और इसमें जो रसिया की जो पार्लियामेंट होती है, रसिया की जो इलेक्शन होती है, उसमें येल्सिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनते हैं रसिया के. ठीक है, 91 जून. ये दो चीज़ें आपको बोरिस येल्सिन के बारे में जो एमसीक्यूज़ में किसी भी तरह से आ सकता है. और हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि 1991 के अगस्त में कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्डलाइनर्स थे, उन्होंने एक कूप किया था गोर्बाचेव के अगेंस्ट. इस कूप को क्रश करने में बोरिस येल्सिन ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और पूरे वो हीरो बन गए थे, रसिया के हीरो बन गए थे इस समय में. ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. बोरिस येल्सिन की ये तीन जो पहचान हम कह रहे हैं. ठीक है, सो आई एम राइटिंग डाउन अबाउट दिस बोरिस येल्सिन क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें आप कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. He was appointed as head of Communist Party in Moscow by Gorbachev. In June 1991, when in June 1990
one when this elections were held in Russia, he became the president. है ना? So in June 1991, when elections were held in Russia, he became the president. And then next, that is also one of his important identity, बहुत important पहचान उनकी बड़ी, that when in August 1991, when Communist Party, when not Communist Party, when hardliners of Communist Party Communist Party staged hardliners of Communist Party staged a coup, C-O-U-P, coup का मतलब तख्ता पलट, a coup against Gorbachev, Boris Yeltsin played a prominent role okay, you are not able to see, just wait a moment. So when hardliners of Communist Party staged a coup against Gorbachev, Boris Yeltsin played a prominent role in crushing, C-R-U-S-H, in crushing the coup. Okay, so this is about Boris Yeltsin, and now we see another questions. Okay. So the next question is, when did Berlin Wall fall? It was in November 1989. Okay, and then we see the next question. This is when did ये इसमें जो टाइमलाइन है ना, उसके कारण आपके कुछ ईयर्स वाले क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं, ये ऐसे भी आपके बहुत ज़रूरी है याद करने के लिए, है ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, when did the Russian Parliament became when did the Russian Parliament permitted multi-party politics? When did the Russian Parliament, Soviet Parliament, not Russian, Soviet,
When did the Soviet Parliament permit multi When did the Soviet Parliament permit multi-party politics? It was in February 1990. ठीक है, and it was done by गोर्बाचेव. ये भी आपको याद रखना चाहिए. गोर्बाचेव ने सोवियत पार्लियामेंट को ये परमिट कर दिया कि वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम हो सकता है, जो अभी तक क्या था, सिंगल पार्टी सिस्टम जो चला आ रहा है. ठीक है, और देन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है. नेम द फर्स्ट ऑफ 15 सोवियत रिपब्लिक्स who which declared its independence first, है ना. Name the yes, name the first of the 15. Name the first of the 15 Soviet republics Name the first of the 15 Soviet republics which declared its independence. Which declared its independence in March 1990. Name the first of the 15 Soviet republics which declared its independence in March 1990. It was Lithuania. ठीक है, Lithuania was the first of the 15 Soviet republics which declared its independence. ठीक है, and now we have next question. The question is what is Duma? Russian parliament is called Duma. Name the Baltic republics which were part of Name the Baltic republics which are part of Soviet Union. The Baltic republics are these countries: Estonia, Latvia, and Lithuania. Okay. And now we have this. When did Gorbachev resign as the president of Soviet Union? And thus, या फिर कह सकते हैं when did the Soviet Union end? है ना? So these are the two questions. The answer is same. 25 December 1991 जब गोरबाचेव ने रिजाइन कर दिया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन, और इस तरह से सोवियत यूनियन का एंड हो गया था. सो द क्वेश्चन इज व्हेन डिड
When did Gorbachev resign as the president of Soviet Union? When did Gorbachev resign as the president of Soviet Union? It was on 25th December 1991. और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी का सेम आंसर होगा, when did सोवियत यूनियन एंड? ठीक है, ये कब खत्म हो गया? एंडेड होगा, क्योंकि पैसिव में आ जाएगा ना. When did Soviet Union ended? It was on 25th December 1991. ठीक है. And now we move to another question. After the disintegration of USSR, which country after the disintegration of USSR, which country became its successor? It was Russia. है ना, Russia became the successor of USSR. And now the next question. Write the full form of CIS. It's Commonwealth of Independent States. ठीक है. And now we have another question. Name the Central Asian republics of erstwhile USSR. erstwhile USSR का मतलब ये हुआ वो USSR जो कि उस समय तक एग्जिस्ट कर रहा था, अब नहीं कर रहा है. ठीक है. तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कौन कौन थे, इनका नाम, और ये काफ़ी इनके स्पेलिंग में मिस्टेक्स होते हैं. अगर फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह में कुछ आता है तो आपको स्पेलिंग भी सही याद होना चाहिए. तो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द नेम्स. ओके. फर्स्ट इज उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, then yes, Uzbekistan, Kazakhstan, the next one is
Turkmenistan, and the fourth, and the fifth one is Kyrgyzstan. ठीक है. Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Turkmenistan and Kyrgyzstan. These are the 5 Central Asian republics which were part of the erstwhile Soviet Union. So this is all for today.